and no one is going to ask you differently what are 6 hours of Azure, what are 6 hours of AWS. This is, I've just shared for the information. Do not get into that I'll go ahead and search Azure ke bhi 6 hours. Don't do that. Stick to this. This should be good enough for you. If you want to understand this once exactly kya hai, you can see this diagram, try to read it. Rehosting mein kuch nahi hai, lift and shift hai. Simply yahan se you do your migration from here to here. That's it, nothing else. Okay. रीफ प्लेटफॉर्म में क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी सी चीजें जो है आप चेंज करते हो, मॉडिफाई अंडरलाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, देन अगेन वो इसी में आ जाता है, मूव यहीं से होता है. okay? Repurchasing, we just explained that you purchase something, maybe some SaaS or some license or anything you purchase. Refactoring में सब कुछ पूरा बनता है फिर से, integration, coding, everything will be done. सब कुछ rewrite होता है. It is as good as जो scratch से app बनता है ना, वैसे ही होता है. Okay, and retain and retire, it's you have already understood that. Okay, now one more keyword you always have to say whenever you are answering any question for migration, that we always followed the approach of Microsoft Cloud Adoption Framework. This is the approach we followed in our organization. How do you make sure that your migrations are successful, there is no chaos? So we always follow Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure migration. What is it? It is, first you define, understand the motivation, that why do you want to move it, what could be the business outcomes, what is the business justification. Okay, prioritize that which app should go first. Priority is very major, plays very major role here, right? So you have to make sure, I mean, you as an, again, this will be done by your architecture team, but you should know what happens in the background. Then you plan exactly कि किस तरह से होगा, क्या होगा, वो सब plan करते हो. Once it is ready, you create your landing zone setup, and then you start this. You don't have to say all this, but you just have to understand that there is a Microsoft Cloud Adoption Framework which talks about defining strategy, planning, being ready, and then adapting it, right? So this is what you can do. It's not that important, but you have to say it. So they won't even ask you, but make sure that you put these words at the time of interview. You put these words, 6 hours, Microsoft Cloud Adoption Framework, and it should not happen कि आप सब words बोल रहे हो jargon, किसी ने पूछ लिया बाद में तो पता ही नहीं कुछ. That should not happen. Okay, so you should know all this. Okay, now let's talk about migration, exactly how it happens on the portal. ये सब हमने जितना देखा ये सब है आपका theory. And trust me guys, for your interview, theory is most important here. I'm saying it with complete responsibility, with my experience as an interviewer, with my experience where I have taken the interviews, with my experience where I've given the interviews. No one in half an hour's interview, 45 minutes interview, no one is sharing their screen or asking you to share your screen and asking you to perform a migration. Never happening. Never ever happening. Right? So you do the practical. I'm not denying that. Do it for your understanding, but the only way they will evaluate you is by asking theoretical questions. So theory is most important thing here. So be focused on that. Okay. So let's and don't go by this. यहाँ पे बहुत कुछ मैंने लिखा है. This is I use sometimes for my architect वाला batch जो उसके लिए भी use करता हूँ कभी कभार. So don't go by this everything. जितना हम class में ये कर रहे हैं, make sure you grasp all that. Make sure you practice that. Make sure you remember that. And I take guarantee that migration topic will be clear. So don't worry about all this कि यहाँ पर इतना सब क्यों है and why are we not doing that. So don't worry about it. Okay. How many projects have you done? ये सब कितना किया है? That I have already covered. Right. Assessment, when it happens, I'll show it to you कि किस तरह से assessment होता है. This is just a small sample. This is not an actual assessment. So this is how it happens. Your architecture team, they will sit with these many questions. ये बहुत छोटा है, trust me. I mean, we ask hundreds of questions to app owners. They get pissed sometimes. Escalation भी हो जाता है काफी बार. यार, is it a migration or is it auditing? Is this team auditing us? It happens. वो भी होता है हम लोगों के साथ कई बार कि why are you asking so many questions? Are you my boss? वो भी होता है.
okay, but you need to know, unless you have all these questions, आप लोग एक अच्छा plan नहीं दे पाओगे. Your architect team will not be able to give a better plan. So you should know कि किस तरह के questions वगैरह आते हैं. You don't ask these questions though, but keep all this in your mind, so it will be easier for you to work. Background अगर पता होता है ना कि क्या होकर आया पीछे, and it becomes easy for you to answer something, to work on that. Confidence मिलता है थोड़ा सा. Okay, so basic questions कि यार application का नाम क्या है, who is the application owner, are there any application, middleware, database, operating system, license agreement that will prevent us for deployment from the Azure. आपका कोई मिडलवेयर के साथ किसी थर्ड पार्टी कोई मिडलवेयर है जो हमको अज्योर पर जाने से रोक सकता है, कोई डेटाबेस जिसके साथ आपने किसी तरह का अग्रीमेंट कर रखा है. नाउ दिस हैज नथिंग टू डू विद टेक्निकल, राइट, बट very important question के maybe technically it is possible to go to Azure, but they have some middleware on their application and they have made the agreement that you cannot leave us for 5 years and it's only 2 years now, or maybe you cannot go to this cloud, that cloud, कुछ भी हो सकता है, right? Are there any application support agreement that will prevent us to deployment from Azure? बहुत important questions होता है ये. Okay, so इस तरह के कुछ questions वगैरह होते हैं. See, what is the SLA of the application which you have provided to your end users community. Why am I asking this? So I can understand the application well, and once I understand the application well, then only I will be able to design an architecture diagram for that client or for this application properly. If I don't understand all these things, मैं assume कर लूंगा अपने हिसाब से कुछ बना लूंगा, that will not work. Please indicate the maximum outage window that could be permitted for the application during any migration activity. कि migration में इसके लिए आप maximum कितना दे सकते हो? 48 hours? Can you give me 48 hours? Can you give me 4 hours? Someone will say, I can't even give you more than 1 hour. It happens, right? We should know that. Accordingly, we can plan. कोई ऐसा ऐप है अगर जिसमें मुझको more than 1 hour नहीं मिल रहा है, so do you think it's a good idea to plan a migration of that application with other 20 applications? यार ये 21 को साथ में कर दो. No, if there is a critical application, what will I do? We have only 1 hour. In this case, I'll make sure that my best engineers are there. I'll make sure one of the architects is there because we will charge also. ऐसे कुछ नहीं है कि आपकी कंपनी सब फ्री में कुछ नहीं कर रही है, राइट? जितना स्ट्रिक्ट वहां से रिक्वायरमेंट होगा उतना चार्जेस आपके ज्यादा होते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. Okay, but you will make sure that you give your best engineers over there. You make sure you plan it accordingly. You make sure your 2 architects are there on site whenever it is happening. You make sure everything has been done, even a minute detail or slightest resource which you wanted, which could have been done as a landing zone setup, it has been done. और जितना भी आने वाला भी काम है उसको भी instead of doing that manually, I'll already write script. यहाँ पे आपके काम आता है Terraform script, and sometimes your architects will write this. They will have to write it now. Okay, कि after moving this machine मुझको इसमें 10 सर्विस को ये करनी है. Now if I keep on doing that manually, 45 minutes मेरे उसी में चले जाएंगे. So what will I do? I'll write a script, a Terraform script. I'll test it first. दो चार बार उसको अच्छे से टेस्ट कर लेता हूँ. Once it is up and running, then I'll apply this as soon as this machine has been migrated. So I can plan it separately. That is the reason, or that is the rationale behind asking these type of questions. Clear? So इस तरह से बहुत questions है. Now we are not getting into this. ये आप लोगों के काम का भी नहीं है. ठीक है? See, does the application utilize any of the local host configuration name resolution? I need to know that, right? ताकि मैं उस DNS records को अपने Azure के internal DNS record में add कर सकूं. We haven't covered the DNS yet. I will do that maybe later. It's not that important topic. DNS पे ज़्यादा questions आते नहीं है और बहुत ही छोटा है. 10 मिनट में we can cover that. But we should know that. That's the only time I will be. If I know it, then only I'll be able to make it clearly. Otherwise वो record होगा ही नहीं. आप application move कर दोगे, वो चलेगा ही नहीं. Okay, so these are the questions which your architect team ask to your app owner. एक है और app assessment का एक और ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को. See, same thing. ठीक है, basic चीजें पूछते हैं हम यहाँ पर. But this is how we do ask questions, and these questions, guys, you as in not you as of now, but any one of you who's planning for architecture, ये कुछ भी बना बनाया नहीं मिला हुआ है. This I have created this from scratch for one of the projects. It wasn't for my company where I'm working, but it was for one of my company where I work as freelance. So I had to create this from scratch. Okay, so you and in Google पे भी आपको बिल्कुल नहीं मिलता, because these questions are not generic questions. Okay, ये आपने जो पहले assessment वगैरह करते हो ना, basic assessment जो first initial meetings में करते हो, उसके बेस पे आपको ये questionnaires बनाने होते हैं. If it is in a Java, if it is a Java application और आप कहीं से Google से .NET वाले application के questions लेकर आ गए हो, it it's not helping you, it's wasting your time and your client's time.
राइट. सो उस तरह से भी होता है, बट यू डोंट हैव टू डू इट. आई एम जस्ट शेयरिंग द बैकग्राउंड वर्क विथ यू कि किस तरह से होके आपके पास काम आता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल. अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो लेट इट बी कंप्लीटली. बिल्कुल भी आप लोगों का इसमें किसी भी तरह का ये नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइग्रेशन. कि माइग्रेशन में क्या क्या माइग्रेशन है. ये तो हमने सिर्फ मशीन की माइग्रेशन की बात की. व्हाट ऑल थिंग्स कैन वी माइग्रेट. So either I can show it to you here. Here I have some more pictures, so I'll show it to you here, और portal पे भी जाकर मैं बताता हूँ. So very first thing is I can move a database. Now there are two ways to move a database. One is I go to that database. इसका practical नहीं हो सकता because I do not have a strong enough machine जहाँ पे मैं SQL को install करूँ, and I do not even have that much of time. Right? So you can say कि मुझको कभी मौका नहीं मिला database को migrate करने का. Machine migrate मैंने की है, and that we are going to do. But I am aware of the process. So what is the process? You go to this database. This is one of the databases. Okay, you go to database, right click on that database, SQL database I'm talking about. Click on task, and here you get an option to deploy database to Microsoft Azure SQL database. Simply बस इतना ही करना है. Next, 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 and your database will be migrated to Azure. But as a landing zone setup, what do you think? What do you guys think is required here? Apart from what we discussed initially, what do you think it's required here? Anyone who has coming from database, जिसने SQL वगैरह पे काम किया है, what do you think will required in Azure? Azure में क्या क्या चाहिए होगा हमको landing zone setup पे? Yes guys, any guess? What are we moving from here? What are we migrating? Yes, yes, no, maybe, not getting it at all. Suraj, Amit, give it a try at least. What are we migrating here in this picture? Database. Database. So what do you think we require? क्या resource चाहिए होगा वहां पर भी? When I say I'm moving a virtual machine from here, तो यहाँ से जो मेरा हार्डवेयर हट गया था, वो हार्डवेयर किसी ने रिप्लेस किया, राइट? वहां पर. सो ये मेरा डेटाबेस किस में होस्टेड है? SQL server. सो व्हाट विल आई नीड ऑन पोर्टल? SQL server. Yes. किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो SQL की मैनेज्ड सर्विस हो या SQL सर्वर हो, बट किसी फॉर्म में वहां पर भी मुझको एक SQL का रिसोर्स चाहिए होगा, राइट? व्हेन आई क्लिक हियर ऑन डिप्लॉय द डेटाबेस टू माइक्रोसॉफ्ट Azure, इसके बाद वो मेरे लॉगिन पेज पे ले जाएगा, एंड देन इट विल आस्क मी अगेन. इस तरह से एक पेज देगा मुझको कि ठीक है भाई, बताओ आपका कौन सा आपका रिसोर्स ग्रुप है, कहाँ पे आपका SQL सर्वर कौन सा, ये डेटा मैं यहाँ से उठा के रखूँ कहाँ पर, राइट? सो विल रिक्वायर्ड वन SQL server over there, which you'll have to create before you move your database. Is it clear? And there are too many things. It's not that easy. We are not going to do it क्योंकि हर चीज हम प्रैक्टिकल यहाँ पर करके भी नहीं देख सकते. And most important thing, you are not the only one who will be doing this. End to end कुछ नहीं करते हो इसमें आप. इसमें आपके पास डेटाबेस का कम से कम पूरी टीम बैठी होती है. 3 से 4 डेटाबेस के लोग हो गए. डेटाबेस का एक लीड होगा, एक आपका लीड होगा, एक इंजीनियर होगा, एक आर्किटेक्ट होगा. एक लंबा सा कॉल आता है 10-15 लोगों का. सो यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट इट कि आपसे नहीं होगा व्हेन इट गोस टू द एक्चुअल टास्क, राइट? और बहुत स्लो होता है. एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने सब टास्क लगा दिया हो गया. वंस यू क्लिक ऑन दिस डिप्लॉयड डेटाबेस, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है, राइट? स्टेप्स अगर आपको पढ़ने हैं, यहाँ पर आई हैव मेंशन द स्टेप्स, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, एंड आई वोंट सजेस्ट कि आप डेटाबेस के इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो. बट हियर स्टिल इफ यू वांट टू डू इट, यहाँ पर सारे स्टेप्स ये किए. व्हेन आई डिड दिस, आई मेंशनड ऑल द स्टेप्स, एंड व्हाटएवर प्रैक्टिकल्स, व्हाटएवर स्क्रीनशॉट्स आई कुड मैनेज, मैंने वो ले लिए थे, राइट? सो यू हैव टू चेक द डेटाबेस रेडीनेस कि आपका डेटाबेस रेडी भी है या नहीं है मूवमेंट के लिए. स्टॉप द SQL इनकमिंग कनेक्शंस, ये होना चाहिए आपका. अदरवाइज ये नहीं है कि यहाँ से डेटा माइग्रेट हो रहा है, वहां से कुछ इनकमिंग भी हो रहा है. सो यू हैव टू स्टॉप दैट. वंस ऑल लॉग्स आर स्टार्टेड, डू द कट ओवर. ये सारे स्टेप्स यू कैन चेक कि किस किस तरह के उसमें टेस्ट होते हैं, राइट? पैरिटी चेक होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेक होता है, देन मूवमेंट चेक होता है. बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट. और इसमें टूल कौन सा यूज होता है, दैट वी विल सी ऑन द पोर्टल. बाय द वे, इट्स DMA. One is you go to your SQL, right click and deploy. एक ये मेथड हुआ आपके माइग्रेशन का, डेटाबेस माइग्रेशन का. ओके, SQL माइग्रेशन का ये एक मेथड हुआ.
but this is applicable only if your database is small. 40-50 MB का database है, it's okay. बड़ा database है, this is not at all recommended. Then you go ahead, you go to portal and you open a tool named data migration assessment tool. Azure data migration assessment tool. We'll go to a portal and we'll see that. Don't worry about it. Okay, इसी tool में यहाँ पे आप assessment भी कर सकते हो. If you guys can see it, maybe it's a little bit. You can open your local copy or the one which I've shared with you, or if it is visible, let me know. So here it is, the same tool. The tool's name is data migration assistant. We'll see this. यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ हम portal पे भी जाके देखेंगे, but we won't do the complete migration. Okay, so here using the same tool, you'll do the assessment first. Project का नाम लिख लो कि क्या project है आपका. Database engine को select कर लो कि कौन सा SQL है, MongoDB है, Oracle है, क्या है, select कर लो आप. Then create it. It will ask you to log into your existing database. जिस database को आपको move करना है उस पे login करने बोलेगा, वहां login कर लो. It will do the assessment वगैरह सब करेगा, आपको report देगा. If you're happy with that, if you don't have to make any changes, कई बार changes देता है. For example, SQL में when it is hosted on prem, most of the time हम login रखते हैं Windows का ही login. There's an option कि आप Windows के login से login कर सकते हो, but when it goes to Azure, it doesn't allow you to log in with Windows credentials. So you have to make a slightest change over there, right? छोटा सा change करना पड़ता है, credential वाला वो है जो एक change करना पड़ता है. So you'll do that and then you'll come here and do the migration. So let's say if I'm doing this one, इसको मैं अगर migrate कर रहा हूँ तो ये Rs वाले में किस category में आ जाएगा? I came to SQL, I did the assessment. In assessment, I came to know that my authentication method is Windows, which doesn't work on Azure. I'll have to go to my SQL server and change the authentication method from Windows to SQL, and then I can move it. So Rs में से किस category में आ जाएगा ये? Rehosting. Anyone else? Rehosting. Anyone else thinks differently? What is replatform then? Yeah, we are updating the version. Sorry? Yeah, No. replatforming. No. Good. You guys got it at least. That was just an example. It's not always. See, it's clearly written. If I go back there, it's a small twist and tweak. It could be anything. Upgrade. मैंने एक example दिया था. It's not always that you have to upgrade a version. ये जो भी example हम discuss कर रहे हैं ना, ये भी exactly आपका replatforming में आ जाएगा. Any sort of modification you are doing, a slightest modification, it will still go to your replatform category. Clear? Something which you are not doing anything, just lift and shift, simply pick it up from here and put it there. No changes, nothing at all. That is your rehosting. Even if a slightest change, जिसमें आपका ये भी आ जाए, authentication method भी change करना पड़े आपको, that is a change and that is replatforming. Clear, guys? Yes, no, maybe, any doubt? Yes. Okay, so yeah, that's how you do your database migration. One method is you directly go to database, click on the database, click on task, go here, deploy it. First method. This is second method. Okay, you can select. See, when it says target Azure में आपने क्या कर रखा? Azure SQL database है, Azure SQL server है, जो भी आपको select करना है यहाँ पर. But it should be there already in your Azure portal. अगर होगा तभी आपको दिखेगा. Okay. DMA can also perform a test and suggest right VM, DB size. हाँ, ये जो assessment होगा ना, इसमें आपको बता भी देगा वो कि before you migrate, so you won't create your resources on Azure before the assessment. Assessment करने के बाद उसकी report के base पे आप बनाओगे. It will show you कि कौन सा right size का VM लेना चाहिए, DB कितना लेना चाहिए, किस तरह का लेना चाहिए, वो भी बताएगा. Okay, report type will have options for check DB compatibility, check feature priority. Okay. कि कौन से features, हाँ, see this is the one I was talking about. Windows authentication is not supported in Azure SQL. Okay, तो इस तरह के basic चीजें आपको ये सारी चीजें assessment में tool खुद बता देगा. You don't have to do anything. Okay. Then in Azure Migrate tool, we'll do this. इसको practical नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? But this is how it looks. Azure Migrate tool इस तरह से दिखता है आपका. For database की बात कर रहा हूँ मैं. Will this is the one, database migration tool. Server वाला हम लोग करेंगे. Okay. Okay, this should be enough, I guess, for database.
clearly said, do not hesitate that I have not worked on any database migration. If you say yes, उसका एक लंबा चौड़ा बहुत सारे questions आ जाएंगे. There are chances you may get rejected. बहुत सारा उसमें पढ़ाई वगैरह extra हो जाती है. You'll have to understand the nature of database. Then उसके लिए आपको थोड़ी बहुत SQL की understanding होनी चाहिए. So clearly say it, and there's no harm. I can guarantee that people who are working on Azure 5-5 साल से भी काम कर रहे हैं, SQL database नहीं मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है database migration. That's completely fine. Nothing new in that. Okay, I was talking about moving an application directly, right? 6 hours में हमने देखा कि एक application में directly move कर रहा हूँ. Zoho Analytics वाला मैंने देखा था, right? I'm using that. Instead of that, what I want to do, that I want to move my application directly. I'll go back here, or let me explain it to you, and then you guys can tell me कि ये कौन सी R वाली category में होता है. Okay, now my server has a website. मेरा एक server है, on-prem पे एक server है, उसके अंदर एक website है. Let's say it's a UT-Kloud.in. मेरी training की website है where people can come watch some videos, enroll themselves. इस तरह से कोई basic activities के ऊपर करते हैं. I've hosted that server. मेरे घर में एक डब्बा पड़ा हुआ है. But now I say यार ये unnecessary जगह खा रहा है. And now it's a time of cloud. Cloud का ज़माना है. Why should I do that? Let me migrate it. Okay, so I hired some consultant. Maybe I am not. I don't have time, or for any reason I hire a consultant. Consultant says, okay, I can help you to move this machine लिफ्ट एंड शिफ्ट. इस मशीन को हम पूरा का पूरा लिफ्ट एंड शिफ्ट कर देते हैं Azure पे, और आप रिमोट लेके वहीं से चलाया करो, वहीं से आपकी वेबसाइट चल जाएगी. I say fine, I am okay with that. But then he says there is one more method, that instead of moving your machine, why don't you just move your website? So you don't have to worry about server, you don't have to pay for the license. What you have to do is simply pay a monthly rent, and your application will be running on Azure. So that you can do using your website migration. Azure migrate using website migration. How it works? Again, there is a tool. वो एक ही tool में आपको सब दिख जाएगा. When we do the practical, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी, and I'll show it to you. Okay. When you start doing that tool, it will fetch the websites from your server. Now this one, the one which is there in the screenshot, okay, it has 6 websites. Now whichever I want to move, I will select one website out of it. I can move multiple also, but let's say that I want to move my eShop website. So I'll check on that. I click next, 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 and ultimately I have my website up and running. Only things which I will have to change, few things, IP, DNS settings, basic चीजें. बस उतना ही मुझको करना होगा. And now I do not have to worry about a server. Why? Because it is being hosted directly on Azure. Azure की किसी server पे maybe web app पे होगा, function app पे होगा, कहीं पर भी I can host it. Right? So server वाला ये picture से चला गया. So is this lift and shift? First question. No. No. What is it then? I'll open 6 hours for you. Sorry, what is it? Replatforming. Here. What is it now? Can you tell me? Replatforming. It is sort of replatforming, you can say, or maybe you can say repurchasing वाले में ज्यादा आ जाता है. So I told you initially कि कोई भी fixed definition, refactoring definitely नहीं है. Refactoring में जो है आपको कोडिंग चेंज करनी पड़ती है पूरी. यहाँ पर I did not do anything. I simply moved कि भाई मेरे वर्चुअल मशीन से हटा के आप एक काम करो, Azure के किसी इस पे होस्ट कर दो. So it could ज्यादातर वो repurchasing वाले में चला जाता है, right? Here ये repurchasing वाला जो हमने देखा है, this is an example of SaaS platform, and the example which we discussed now, ये कौन सा platform का example है? Is it SaaS or PaaS or infrastructure as a service? The one which I just explained. We are going to day 1. Infrastructure as a services. Anyone else? Do you guys remember infrastructure, platform as a service, software as a service? Yes, guys. I am moving my website from my server. I am hosting it on Azure web app or Azure function app. तो ये किस तरह का platform हुआ? Is it SaaS? Is it PaaS? Or is it infrastructure as a service? Yeah, Suraj, what do you think? Satar bhai, Asif bhai. Platform as a service.
Amit bhai, what do you think? Okay, let's not waste time. Yes, that's correct. Whoever answered was Suraj or Satar, both are unmuted. So yes, that's correct. That is platform as a service. Okay, software as a service basic चीज बताता हूँ. आपका Google Drive software as a service, Gmail software as a service. Do you have to worry about it कि उसका कोड वगैरह कुछ ये हो गया? As an end user, do you have to worry? Gmail down हो गया. Do you have to worry about it? Do you have to work on that? No. You're simply using their services. जब भी आप आ जाता because it's free तो आपके पास ठीक है कोई SLA नहीं है. But जब भी आप आ जाता you'll use it. That is your software as a service. Where you will simply go log in and start working. That's it. अपना एक login ID बना लो और आप उस पे काम शुरू कर दो. Platform as a service में क्या होता है? You don't have to worry about server. You don't have to worry about के server का password. You don't have to worry about के server का RAM. You don't have to worry about server का CPU. You don't have to worry about के server की patching कौन करेगा. But उस server पे जो code रखा हुआ है ना, that you have to build. So the case which we discussed, यहाँ पर जो मेरा website है, जिस code मेरा अपना है, I'm just hosting that on their platform. उनके किसी server पे और wherever they are hosting, I don't mind that, and I don't even have to worry about it because what they are offering me, it's SLA कि इतने time ये up रहेगा. अब उसको up रखने के लिए वो background में HA use कर रहे हैं. Are they using high availability? Are they using availability set? Are they using ASR? Are they using DR? I don't have to worry about it. I am just concerned if something goes wrong to my code, then I have to worry. I have to work. SaaS में मुझको किसी भी चीज की जरूरत ये नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, right? Everything they will take care of. If Gmail is down, I don't do anything. If Google Drive is down, I don't do anything. But there is an app जो मैंने बनाई है, so I have to worry about it. लेकिन उसमें अगर server down हो गया, I don't have to worry about it. Region down हो गया, I don't have to worry about it. किसी भी तरह का networking issue है, I don't have to worry about it. I'll simply ask Azure a question that you promised me 99% SLA. Am I getting that or not? If not, then what am I getting? Am I getting some discount in bill? मतलब पूछना भी नहीं पड़ता आपको, by default मिल जाता है अगर Azure अपना SLA complete नहीं करता है तो. Okay? But when it comes to infrastructure में जो आपने सर्वर बनाया इसको मल्टीपल जगह रेप्लिकेट करना, ये सब करना, it is your responsibility. Right? So that is the difference between SaaS, PaaS and infrastructure. We are not getting there. As we are on the last topic today, migration पे है, और अगर आप अभी infrastructure, PaaS और SaaS की understanding clear नहीं है तो please start reading. Okay. So the next example which we discussed, it is that belongs to your platform as a service, where you are moving your website to Azure and you're leaving your server here. हाँ, पूरा का पूरा server उठा के वहां पर डाल देते ना, then it would be infrastructure as a service. Okay, तो ये हुआ आपका website migration और app migration. It's not only website, it's an app migration, database migration. Now we are coming to the actual one which we are going to perform, which is your server migration. और ये उन सबसे ज्यादा complex भी है और सबसे ज्यादा use होने वाला भी है. This is the reason we are going to do the practical for this one. I don't think so we'll be able to do the practical today migration का, because it takes time for replication. So I'll do the setup today और कल हम इसका migration करेंगे. Okay, but let me explain it to you first. What is the approach? इस approach को अच्छे से याद रखना guys. They do ask what is the approach you follow to server assessment and then server migration. One thing, is assessment a mandatory prerequisite for migration? What do you guys think? Or is it optional? I'm not saying recommended है, यहाँ से ये मिलेगा, वो benefit मिलेगा. Once we do the assessment, then only I'll come to know what size should I use. I agree to all that. My simple question is server assessment a technical prerequisite, a mandatory technical prerequisite for server migration, or for that matter any database or app हो कोई भी, assessment migration के लिए technical prerequisite है क्या? That is my question. Yes, guys. Sorry. Yes, no, maybe. Yes. Anyone who thinks नहीं है? Okay, so yeah guys, answer is incorrect. Unfortunately, it is not a mandatory. You don't do your assessment,
You simply start with migration. Azure doesn't care about it. It allows you to do that. नुकसान आपका होगा, that is a different thing. कि जहां आपको 4 GB की मशीन लेनी थी आपने 8 GB की ले ली, जहां 8 की लेनी थी अब मे बी आपने 6 की ले ली, बाद में सर्वर डाउन होगा, ऐप ये होगा, whatever the case is. But technically you can go ahead and do the migration directly. Okay, and you will never ever see this live environment में, कभी होता हुआ नहीं देखोगे, but it is technically possible. Clear? Yes guys, clear to everyone? Others? Nitesh, Satar bhai, Yes. Suraj bhai, is it clear to everyone? To all of you? Yes. Okay. Yes. Now what do we do when we do the assessment with discover servers? Now what does it mean? कि आपके एक्चुअल एनवायरनमेंट में कितने सर्वर्स है, पहले उनको डिस्कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल. ऑब्वियसली मैन्युअली कोई नहीं जाके गिनता है, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ टूल यू विल डू द डिस्कवरी ऑफ द सर्वर. कितने सर्वर्स है, लेट्स डिस्कवर देम. ओके, you install the Azure Migrate appliance. How to do this, ये अभी हम practical देखेंगे. Run the Migrate appliance. Install agent to find dependencies. Access the workload. Create estimation. I'll explain it to you in practical. ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ पर आप सिर्फ इसको पढ़ लो. And you don't have to remember exactly ऐसे इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं. माइग्रेशन की अप्रोच को आप लोग समझो. इसमें से 2-4 वर्ड्स अगर मिस भी हो जाते हैं, so it's okay. You don't have to worry about it. Okay. माइग्रेशन में क्या होता है, डिस्कवरी तब भी होती है फिर से. क्रिएट द विंडोज वीएम एज पर द स्पेसिफिकेशन फॉर योर वर्कलोड्स. जो भी आपको असेसमेंट में रिकमेंडेशन मिला था, अगर आपने असेसमेंट किया है तो डू इट. अगर आपने अपना मैनुअल असेसमेंट कर रखा है, यू गो अहेड विद दैट. मेरे पास सिर्फ 10 सर्वर्स है, ओके, एंड आई नो एग्जैक्टली कि इनका रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है और Azure पर मुझको कितना लगने वाला है. आई डोंट रिक्वायर योर असेसमेंट, सिंपल. आई विल गो अहेड एंड डू दैट. तो इस तरह से ये जो आपका माइग्रेशन और ये यहाँ पर डिफरेंस ये है. सो वंस यू डू दिस, इंस्टॉल द मोबिलिटी सर्विस ऑन योर ऑन प्रीमाइसेस EC2 और एनी फिजिकल सर्वर. मोबिलिटी सर्विस का मतलब क्या हुआ, आई शो इट टू यू कि एग्जैक्ट टूल कौन सा है, वो हम देखेंगे पोर्टल पे. कि नाउ यू आर माइग्रेटिंग योर मशीन्स. तो आपको माइग्रेशन में क्या, बैकएंड में क्या यूज होता है? यस गाइस, व्हिच टेक्नोलॉजी डू वी यूज? ASR. ASR. So you'll have to install something जिससे कि replication शुरू हो जाए. Replication शुरू होगा. Once server is ready, you will see the discover server complete of them, and you will see an option to replicate. The moment they are ready for the replication, you'll see an option to replicate. The moment you click on replicate, it takes hours. पूरा उसको replicate कर देगा, right? And then you do a test migration. Let's say there are 50 machines, पूरे 50 machine उसने replicate कर लिए. But you don't go ahead and simply start migrating all those 50 machines together. You do a test migration. कहाँ पर ये अप्रोच कहाँ पर किया हम लोगों ने? Can you guys remember that? कि पहले टेस्ट करते हैं, then failover टेस्ट क्लीन अप करते हैं, and then we do the failback or failover. Yes guys, do you remember when did we do that? Storage. Not really. Storage में हमने टेस्ट failover वगैरह कहाँ किया? Replication. Yes, again ASR. That ASR, is the reason I yes. have been telling you कि ये दोनों इसके पीछे यूज ASR ही, और ऐसे सारी चीजें आपको वही दिखेगी. If you guys remember, ASR में हमने सेम चीजें की थी. We replicated first, then we did a test failback, जहां पे एक्चुअल सर्वर को कुछ नहीं हुआ था, एक्चुअल डेटाबेस हो या सर्वर उसको कुछ नहीं हुआ था. सिमिलरली व्हेन यू डू द टेस्ट माइग्रेशन, आपके एक्चुअल सर्वर को कुछ नहीं होगा, आपका एक्चुअल सर्वर रनिंग होगा, और रेप्लिकेशन इसका जो एक कॉपी बन गया ना यहाँ पर, तो ये कॉपी चलने लगेगा. यू आस्क योर एप्लीकेशन टीम टू चेक दिस. ओके, वंस दे चेक, देन यू क्लीन अप दैट माइग्रेशन, सब कुछ फिर से डिलीट हो जाएगा, एंड देन यू डू द एक्चुअल माइग्रेशन, जहां पे फिर आपका फिजिकल सर्वर जो है वो बंद हो जाएगा, एंड देन एवरीथिंग विल बी मूव्ड हियर. उसमें डाउन टाइम आएगा. Clear guys to everyone? Okay. Yes. Now what are the issues and ports we face? VMware में जब काम कर रहे हो आप तो 443 पोर्ट लगेगा. 443 वैसे ऑलमोस्ट हर जगह लगता है. Hyper-V होस्ट में कर रहे हो तो ये सारे पोर्ट्स लगेंगे. 5985, 5986. You don't have to worry about it. ये सब ये करना नहीं है आपको. But if they ask कि आप किस तरह के issues face करते थे, then you can say कि we have almost most of the time we have faced issues with ports like 5985, 5986.
these ports are not opened or not they are not listening, इस तरह से इनबाउंड पोर्ट्स, ये पोर्ट्स के नंबर, एक दो पोर्ट्स के नंबर आप याद रख सकते हो। okay? कहाँ पर होते हैं सारे पोर्ट्स वगैरह ओपन? ये फायरवॉल में होते हैं। Who do you think will do it? Do you think you will go to their do you think you will go to their infrastructure and open this port for them? No. Yeah. Who will do that then? Obviously their admin team. You will simply just say tell them or share the request with them. Okay, this is the prerequisite before I migrate. उसमें जो कुछ सिक्योरिटी एनालिसिस होना है, अप्रूवल वगैरह जो कुछ होना है, वो होने के बाद पोर्ट ओपन हो गए, 3-4 दिन लग जाता है उसमें भी। पोर्ट ओपन हो गए, you will get a confirmation and then you will be able to do it. Is it clear? By the way, I have shared it with you in case you want to try opening some port वगैरह, but you don't have to worry about it. Actual environment में आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है, you guys don't do it. Okay. So this is how you do it, guys. This is how your migration is. So we have 2 minutes left. If you guys have any questions, let me know. If not, we'll stop the session after 2 minutes. I mean, whenever this stops, we'll resume at 15:30 and we'll start with the portal now. Yes, any questions guys here? If you do not understand anything here, don't worry. इसका हम practical देखने वाले, तो ये वैसे ही clear हो जाएगा. And you don't even have to mug up this line by line. इसको कुछ याद भी नहीं करना, इसका हमको approach समझना है. Okay, this is just the approach we have to understand. Yes guys, any questions do you have? We still have 2 minutes left. If you guys have any questions, let me know. Okay, as we have 2 minutes, let me show you something. Can you guys see this? Yes. Data migration assessment tool, that is a different thing. और यहाँ पर भी आपको एक जो है ना assessment मिलता है कि किस तरह का रिसोर्स आप चाहते हो। स्टोरेज अकाउंट, ट्रांसफर सिनेरियो क्या है, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव कर रहे हो, माइग्रेटिंग क्लासिक स्टोरेज टू आर्म, क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, और अदर क्लाउड ऑब्जेक्ट लोकल ऑन प्रेमाइसेस से ला रहे हो, ट्रांसफर रेशियो क्या है, बार बार ये करने वाले हो। आई मीन यू कैन पुट ऑल योर इन्फॉर्मेशन, कितना डेटा है, आपके बैंडविड्थ स्पीड कितनी है, ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी क्या है, इज इट अ वन टाइम जॉब और रिपीटेडली हर बार होने वाला है, एंड देन यू गेट सॉल्यूशंस हियर. सो गो अहेड एंड चेक दिस वन आल्सो वंस. दिस इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन. किसी भी तरह का मूवमेंट आप वहां से या एक सिंपल 1 MB का भी डेटा वहां से कॉपी भी कर रहे हो ना, दैट इज आल्सो माइग्रेशन. स्टोरेज अकाउंट एक्सप्लोरर पे जाके भी जो करते हो ना, वो भी माइग्रेशन ही हुआ. बट वो सब डिस्कशन नहीं होता इंटरव्यू में, एक ही माइग्रेशन डिस्कस होता है, मशीन्स का या डेटाबेस का. वी विल फोकस ऑन मशीन्स. सो लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट गाइस. आई विल स्टॉप इट and I'll go to the portal directly once we start at 15:30. See you guys.